Good morning students, welcome to the lecture 5 of the chapter 5 data handling. So in all the 4 lectures we have discussed about if a data is represented or presented in the form of frequency distribution table or grouped frequency distribution table, then this data can be represented by using 3 methods. What are they? The first one is bar graph, double bar graph and histogram. यार अर्थ कौन ना जदि कौन डाटा है either grouped frequency distribution table बा only frequency distribution table माने एमिति फॉर्म में देई थिबो तले एई जो डाटा गिवन अछि ए डाटा को हमें चाहिले तीनटा वे रे रिप्रेजेंट कर परिबो बा तीनटा मेथड रे रिप्रेजेंट कर परिबो हला कोन से मेथड आइदर हमें बार ग्राफ थ्रो रे रिप्रेजेंट कर परिबा हला नले डबल बार ग्राफ थ्रो रे और हिस्टोग्राम थ्रो रे रिप्रेजेंट करि परिबा बुझिला फॉर एग्जांपल सपोज इट गोटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अछि बुझिला organized table or organized frequency distribution table अच्छा कौन है टेबल ला गिवन कोजी this table refers to time spent by a student in a day गोटे दिन रे गोटे स्टूडेंट को क्षेत्र रे बा को काम पाए केते टाइम व्यवहार करूची गिवन अछि हला गोटे दिन माने केते घंटा 24 आवर ताले टोटल 24 आवर रे से विभिन्न प्रकार काम करूची कोन काम करूची देखिबा स्लीप सोच रात रे केते घंटा 8 घंटा देन सकाळ उठी स्कूल जाउची केते घंटा 6 घंटा स्कूल आसी की खेलुची केते घंटा 3 घंटा खेल सारे परे किछि होम टास्क करूची केते घंटा 4 घंटा एंड फाइनली अदर्स माने कोन प्रेयर करथुबो खाउथुबो टीवी देखुथुबो एंटरटेनमेंट होथुबो बुझियला तो अदर्स से डिफरेंट काम गुडा को गला ताकू केते टाइम व्यवहार करूची 3 घंटा व्यवहार करूची हला so this is a grouped frequency distribution table where the time spent by a student in different work has been given हैला तो एटा कोन गोटे ग्राफ एटा को हमें एबा ए डाटा को हमें कोन कहबा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहबा ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहबा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहबा ग्रुप कहबा नहीं व्हाई काहे कि ना वर्तमान ए जो कॉलम टारे ग्रुप है कि नहीं जति हमर ग्रुप है कि था 20 रो 30 हैला 30 रो 40 40 रो 50 ग्रुप है अछि कि नहीं so it is not a grouped frequency distribution table it is only a frequency distribution table okay so ए जो frequency distribution table डाटा को हमें चाहिए कोन करि परिबा का माध्यम रे शो करि परिबा जे जोटा frequency distribution table बार ग्राफ माध्यम रे शो करि परिबा हां कि नहीं केमति शो करबा बार ग्राफ थ्रो रे त हम कोन करबा पड़िबो गोटे y एक्सिस नाम पड़िबो हां कि नहीं गोटे x एक्सिस नाम पड़िबो ओके so हमें जानि छै ऑलवेज y एक्सिस कोन पई यूज करा जाय टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ओके so एटा पई हमें कोन व्यवहार करले टाइम केते टाइम लागिला x एक्सिस रे का कोनबा डिफरेंट वर्क ओके नाउ वी विल ड्रॉ बार ग्राफ देखो स्लीप पई 8 घंटा so आप x एक्सिस को विभिन्न डिवाइड कर दबा ओके so what is the bar graph a bar graph is the drawing of rectangles or bars of same width but the consecutive bars must have a gap between them ताले कोन की करबा किछ रेक्टेंगल्स को हमें तयारी करबा ओके सो सोले पे केतना व्यवहार करछि 8 घंटा मन करे डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 हला ताले हमर ट्रायंगल ड्रा कर सॉरी रेक्टेंगल ड्रा करबा जो रेक्टेंगल ता कहा को शो करिवो द टाइम स्पेंट इन स्लीपिंग हला ताले देखो स्लीपिंग पाइन केते व्यवहार कला घंटा 8 घंटा सेम स्कूल गला के समय स्कूल ले यूटिलाइज कला 6 घंटा सपोज एटा ला हमर स्कूल पाइन 6 घंटा हला प्लेइंग पाइन 3 घंटा सपोज दिस इज योर टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट फॉर प्लेइंग again home task fine 4 hour home task fine मतलब 4 hour गला और भी अछि गोटे जिंस कोन एटा others हला others में केतना व्यवहार कला so this is the bar graph in which we can represent the frequency distribution tables okay so जो तीन प्रकार हम ग्राफ पढिले बार ग्राफ हो बा डबल बार ग्राफ हो बा हिस्टोग्राम हो ए तीन प्रकार ग्राफ रे हम कोन देखिले ना we need a graph paper to represent them एमान को रिप्रेजेंट करिया पे हम कोन करे पड़े गोटे ग्राफ पेपर दरकार प्लेन पेपर रे आपको हमें शो करि परिबा ना सो वी नीड ए
ग्राफ पेपर हैला बट देयर इज अनदर मेथड आउ गोटे अलगा मेथड अछि through which we can represent this frequency distribution tables data without using the graph paper बुझेला त माने एमिति गोटे मेथड अछि जो मेथड माध्यम रे हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जहां भी डाटा अछि ताको हमें बार ग्राफ माध्यम रे शो करबानी कोन से ग्राफ पेपर यूज करि परिबानी केवल गोटे प्लेन साधा पेपर ऊपर चाहे ड्रॉ करि परिबा बा रिप्रेजेंट करि परिबा एंड दिस सेशन is about that method and that method is known as circle graph okay so our today's topic is circle graph or it is told as pie chart बुझेला ताले pie chart बा circle graph होची एमिति गोटे डाटा रिप्रेजेंटेशन और एमिति गोटे मेथड जो मेथड रे हमें गोटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रो डाटा गडा को विदाउट यूजिंग एनी ग्राफ पेपर शो करि परिबा हला तो केमिति का शो करि परिबा कोन सर्कल ग्राफ एबे हम जायला ओके सो फ्रॉम द नेम सर्कल ग्राफ देयर इज अ वर्ड सर्कल गोटे वर्ड अछि ने सर्कल ता माने कोन ता माने सर्कल ग्राफ रे हम गोटे सर्कल ड्रॉ करिवार अछि अंडरस्टूड सपोज दिस इज a circle and this circle represents all the data given in this frequency distribution table a frequency distribution table जहां भी डाटा अछि सब जगह डाटा कोठी हमें रिप्रेजेंट करि परिबा एई सर्कल भीतर ही रिप्रेजेंट करि परिबा अंडरस्टूड ओके सो व्हाइल ड्राइंग द सर्कल्स you should keep in mind the radius of this circle is not fixed you can take any circle of any radius ता माने न जे जणे जदी मन कर एई क्वेश्चन बाय कहला हम एति बडो सर्कल रे ड्रॉ करली किंतु आ जने कोन कला से कहला हम एति बडो करिबे एति बडो ड्रॉ करिबे ताले कोन ये भूल ये ठीक नो बोथ यू आर करेक्ट दुई जन जाक समान हैला डिपेंड करनी कि रेडियस ता केते रेडियस किछि भी हे पारे हैला बट इंपोर्टेंट कोन इंपोर्टेंट होची ए सब जाक डाटा ए सर्कल भितरे और ए सर्कल भितरे रिप्रेजेंट हेतिबो दैट इज इंपोर्टेंट ओके सो रेडियस किछि भी हे पारे तुम कोन से भी रेडियस रे गोटे सर्कल तैयारी करि पारे ओके तापर कोन करा जिवो ना दैट सर्कल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स तापर सर्कल को बहुत बड़े पार्ट रे डिवाइड कर दिया जिवो हैला मने करो मुई सर्कल टा को मने करो एमती 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 करी केतरा पार्ट रे डिवाइड कर दे देखिला केतरा पार्ट रे डिवाइड हैला फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट ओके नहीं the circle is being divided into 5 parts okay suppose this is your first part second part third part fourth part and fifth part now these parts are known as sector जो different parts में divide कर देलु से जो parts बड़ा कौन कह जाए sector बुझियला एटा हो कोन है जो sector 1 एटा है जो sector 2 एटा है जो sector 3 okay it is your sector 4 and this is your sector 5 so in a circle graph you have to divide the circle into many parts and each parts are known as sector okay आ गोटे जिस बटन ध्यान दियो जो सेक्टर हम तैयारी करू सब सेक्टर साइज कोन समान देखिला सब बड़ सेक्टर टा किया आसला फोर्थ सेक्टर सब बड़ आसला तार टिके छोट किया आसला थर्ड सेक्टर टा तार टिके छोट किया आसला फिफ्थ सेक्टर टा तार आउट के छोटा आसला फर्स्ट सेक्टर टा और सबुटार छोटा है कि सेकंड सेक्टर सो द सेक्टर दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द सर्कल मे हैव डिफरेंट साइज तनको साइज समान ही पारे अलगा ही पारे बुझेला डिपेंड करू जे कहा ऊपर नहीं जो डाटा मान के ऊपर हैला आ ईच सेक्टर रे कोन करबा ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा प्रत्येक सेक्टर रे गोटे सिंगल डाटा को हम रिप्रेजेंट करि पारे देखो एटी केतना डाटा अछि कहला 1 2 3 4 5 पांचटा डाटा अछि ताले केतरा पार्ट हम डिवाइड करली पांचटा पार्ट रे डिवाइड करली जे पांचटा डाटा अछि अब प्रत्येक पार्ट रे कोन करबा गोटे गोटे डाटा के इंसर्ट करबा बा लिखिबा बुझिया सपोज देखो सबठो अधिक टाइम कोज पे लागु छी पिला को से स्टूडेंट को देखिला एटा बार कोन पे लागु छी सोइबा पे लागु छी ता माने कोन जो पांचटा पार्ट रे मु डिवाइड करिली ताले सबठो बड़ सेक्टर जे हैला दैट सेक्टर रिप्रेजेंट स्लीपिंग ए सेक्टर कोन रिप्रेजेंट करा केत समय सोइला बुझियाला ना तार टिके कोन के गयला देखिला 6 घंटा स्कूल ले बिते छी सो मु कोन करि परिबी जे तो इटा हमर सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर सो आपन कोन कहि परिबी स्कूल पे हमें डिवाइड कर परिबे सेक्टर टा हो कि नहीं सो
each sector represents a single data, okay, as well as the size of each sector vary and depends upon the frequency. कहाँ पर depend करेगा? Frequency पर depend करेगा. है ना? Frequency जहाँ ही थी वो सही अनुसार size हमें देखी पाएगा. ताले बुझिया लगे नहीं? ताले first जिनिस जानी गले हम गोटे circle तैयारी करियर अछि. Second जिनिस जानी गले जे से circle को different sector रे divide करियर अछि बा different parts रे divide करियर अछि जोटा कि हमें कहू sector. Third कथा हला कि से sector रे size change ही पारे बा समान रही पारे. That depends on number of frequency or number of time. बुझिया लगे नहीं? And fourth and most important thing कौन? Most important thing हला देखो जेतेबे दुटा लाइन सेगमेंट परस्पर को मीट करूछंती एटा लाइन सेगमेंट कि नहीं एटा लाइन सेगमेंट कि नहीं then they will form an angle in between them सेमाने परस्पर गोटे एंगल तैयारी करछन हां कि नहीं कहलो yes it is true जे कोस तम नियो माने एटा गोटे हला लाइन सेगमेंट it is also line segment then they will form an angle in between them. Similarly you can see here for the sector 1 there are two line segment ए जो sector पे line segment अछि कि नहीं ओके अछि ताले से गोटे एंगल क्रिएट करथु कि नहीं यस करूथबे माने कर से एंगल ना होची कोन एंगल 1 क्लियर. Similarly sector 2 पाई एठी गोटे एंगल क्रिएट होतो से एंगल नाम कोन एंगल 2 understood. This sector's angle is known as angle 3, this sector's angle is known as angle 4 and this sector's angle is known as angle 5. Understood. So each sector will form an angle, okay, and the most important thing is the sum of all these angle एटी केतना एंगल क्रिएट होइछि पांचटा एंगल क्रिएट होइछि कोन कोन ना एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5. So the sum of all the angles should be 360 degree. This is the most important thing in a circle graph. So circle graph पे हमें तैयारी करेगा जो सेक्टर तैयारी करे से हम जेतिकिटा भी एंगल तैयारी करथो समस्त का एंगल मिसी केते होतबो 360 डिग्री काहे 360 डिग्री काहे 180 डिग्री नो तार कारण हो देखिलो इरे गोटे कोन सर्कल कि नहीं गोटे सर्कल ला टोटल एंगल केते डिग्री 360 डिग्री. I have told you in class 7 the total angle of a circle is 360 degree and that is known as complete angle. That is known as complete angle. So the sum of all the angles formed by the sectors must be 360 degree. Understood? Now let us discuss about two things about the circle graph. The first thing is what a circle graph represents. What a circle graph kaha ko represent karuche. And the second thing is why it is need to draw a circle graph. कौन पे हम गोटे सर्कल ग्राफ ड्रा करिबा इंस्टेड ऑफ बार ग्राफ हमें चाहिए ए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गोटे बार ग्राफ भी ड्रा करि परथांते तो हमें कौन बा प्रिफर करले कि हम नहीं हमें सर्कल ग्राफ भी ड्रा करिबा. सो एई दिरा जिंस ऊपर हमें वर्तमान देखिबा. सो फर्स्ट पता करथिले व्हाट ए सर्कल ग्राफ रिप्रेजेंट गोटे सर्कल ग्राफ कौन रिप्रेजेंट करूचे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्कल ग्राफ. एटा गोटे सर्कल ग्राफ एग्जांपल देइछि हैला. This circle is being divided into how many parts? This is divided into 1, 2, 3, 4, 5. So fifth part or 5 parts and each parts are known as sectors. प्रत्येक part को sector कहा जाए. And प्रत्येक sector रे कौन है ना गोटे डाटा represent है. हैला. So this circle graph is about time spent by a student in a day. ताले आर अर्थ हैला गोटे दिन रे गोटे स्टूडेंट टी कोन कोन काम करिछि ताको टोटली एई सर्कल ग्राफ रे रिप्रेजेंट करिबे. कोन कोन यूज करिछि देखिबा हैला. सी फॉर स्लीपिंग सोइबे पाई द स्टूडेंट विल टेक 8 आवर्स ताको 8 घंटा लागुछि सोइबे पाई बस से सोजे 8 घंटा. ताले सर्कल ग्राफ जणा पड़ी गला कोन द स्लीपिंग आवर फॉर द स्टूडेंट इज 8 आवर्स. Similarly, the schooling hour for the student is 6 hours. That means he spends 6 hours in school. School से 6 घंटा बीते दोछि. Similarly, he spent 3 hours for playing. He spent 3 hours for other activities like as I have told you, entertainment, TV watching, okay, prayer, eating, and many more things. Similarly, for doing homework, the student take 4 hours to spend. ताले एटी कोन गिवन हे वाला. So this circle graph represents
the different time taken by the student for different work in a day. गोटे दिन रे विभिन्न प्रकार काम करिया पई केते केते समय लागुची ताको रिप्रेजेंट किए करिला दिस सर्कल ग्राफ बुझिला कि नहीं तो सर्कल ग्राफ काम जानि हला ये कौन कला विभिन्न प्रकार डाटा को रिप्रेजेंट करिला नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग कौन आसिला सेकंड थिंग आसिला जे व्हाट इज द नीड ऑफ ए सर्कल ग्राफ कौन पे हम गोटे सर्कल ग्राफ ड्रा करूचे बार ग्राफ ड्रा न करे बुझिबा हला देखो a circle graph is used कौन पे यूज करा जाए to show the relationship between the whole and its part यार मीनिंग आगो बुझिबा बोलो से so circle graph कौन पे यूज करा जाए because it shows the relationship between the whole and its part ये कौन करे whole माने कौन गात नो whole means complete okay or you can say full so कहा का relationship create करिवो this circle graph creates relationship between the whole माने पूरा complete and its part और ताको जो different part रे divide कराय थिबो सेमान को भीतर ଗୋଟେ relationship तैयारी करिया पय हम circle graph यूटिलाइज करू let us take an example suppose हम ଗୋଟେ एग्जांपल देली माने ଗୋଟେ मैथ एग्जाम हेछि हला तो मैथ एग्जाम रो फुल मार्क होछि 30 okay let's talk about the last exam that we have conducted that is the fortnight test okay the total mark of that exam is 30 हला कि नहीं माने गोटे पिलाटे student 1 any one of you or student A will occupy 15 mark बुझियला ताले हमर टोटल मार्क केते दिला 30 दिला से केते मार्क ऑक्युपाई कला 15 मार्क ऑक्युपाई कला तारे जरा हमें से खाता रे मार्किंग करिवा केमिते लिखिबा 30/15 लिखिबा ना 15/30 लिखिबा ऑब्वियसली हम 15/30 लिखिबा कि नहीं सो यार मीनिंग कोन बुझेला इट शोज दैट आउट ऑफ 30 मार्क्स द स्टूडेंट गॉट 15 मार्क्स हो कि नहीं 30 मार्क से 15 मार्क्स रखिला सो 30 मार्क कोन हला फुल मार्क हो कि नहीं दिस इज फुल मार्क एंड 15 मार्क कोन हला सिक्योर्ड मार्क केते मार्क रखिला सिक्योर्ड मार्क ओके सो 30 मार्क से केते मार्क रखिला 15 मार्क रखिला 30 मार्क हला फुल मार्क एज आई हैव टोल्ड यू फुल मार्क मींस कोन होल तताला होल मार्क केते थिला 30 थिला 30 से केते रखिला 15 रखिला तो 15 टा कोन पार्ट गोटे 30 गोटे पार्ट बुझिया लागि नै सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फुल मार्क एंड सिक्योर्ड मार्क एटा कहा का रिलेशनशिप को बुझिया देला जे 30 मार्क्स से 15 मार्क्स रखिला सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फुल मार्क एंड सिक्योर्ड मार्क हो कि नहीं सो बुझिया देला जे फुल मार्क और सिक्योर्ड मार्क जो रिलेशनशिप क्रिएट करला हम जहां फल रे जानि पारियो जे केते मार्क रखि छै एग्जैक्टली गुडे सर्कल ग्राफ कोन शो करिवो गुडे सर्कल ग्राफ को देखिला इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल माने कोन this total circle okay and its parts and we know a relationship always defined in which form in division form दुजो गते हमें रिलेशनशिप बाहर करिबा कोन करिबा हमको डिवाइड फॉर्म लिखिबा फ्रैक्शनल फॉर्म लिखिबा हो कि नहीं देखो एठी हमें का रिलेशनशिप बाहर करले फुल मार्क और सिक्योर्ड मार्क भितरे सो सिक्योर्ड मार्क ता कोन ना गोटे पार्ट ताको हमें न्यूमरेटर रखिले फुल मार्क माने कोन टोटल माने होल ताको हम कोड रखिले डिनोमिनेटर रखिले आ ताको गोटे फ्रैक्शनल बा डिवाइड सिंबल दैट सो एनी रिलेशनशिप इज ऑलवेज डिफाइंड इन दिस फॉर्म और ताको हम को फॉर्म लिख परबा रेशियो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6 ओके दिस इज द रेशियो फॉर्म सिमिलरली देखो एडी होल माने का बुझाइला द टोटल सर्कल ता माने कोन कंप्लीट सर्कल बुझियला बर्तन देखिबा जे होल टा केते देखो सोइबा पई केते घंटा यूज कला 8 घंटा स्कूल पई 6 घंटा प्लेइंग पई 3 घंटा होमवर्क पई 4 घंटा एंड अदर्स पई 3 घंटा त टोटल केते टोटल माने ही तो होल सो टोटल केते घंटा यूज हेइ छि तारो देखि दबा 8 6 14 3 17 4 21 3 24 आवर्स
Understood? So the whole is how much? The whole is 24 hours. जेमिति हम एटी बार करले टोटल मार्क केते बा होल केते 30 मार्क्स. सेमिति for this circle graph the whole is 24 hours. होल माने गोटे दिन नो कंप्लीट डे माने 24 घंटा बुझिया. बर्तमान पार्ट्स केते हैला होल माने बुझी हितला बर्तमान हम बुझिया पार्ट्स माने कोन. देखले एटी केतरा पार्ट्स डिवाइड है. No doubt पांचटा पार्ट डिवाइड is 5 parts. So these parts are known as sectors. बुझियला. Suppose जणे कोन गला. Suppose someone tried to find the relationship between sleeping hour and the whole. जणे कोन करिवो ता गोटे रिलेशनशिप बाहर करिवो. कहा का भितरे केते घंटा सोइची टू द होल. ताले से केमिति का बाहर करिवो देखो. Suppose the proportion माने कौन. proportion माने होची रिलेशनशिप बुझिया. proportion माने होची रेशियो. proportion माने होची डिवीजन. so the proportion of sector of hours spent in sleeping to whole. तारे एटी हम कोन बाहर करबा. कहाकार प्रोपोर्शन बा कहाकार रेशियो बा कहाकार रिलेशनशिप बात करिया. देखो सेक्टर ऑफ आवर्स केते घंटा स्पेंड करा है कोन पाई सोइबा पाई टू होल. ताले कहाकार रिलेशनशिप बाहर देखो सोइबा आ होल. ताले एटी पार्ट ता के हे गला सोइबा ता पार्ट हे गला कि नहीं. स्लीपिंग गोटे पार्ट हे गला कि नहीं. स्लीपिंग केते समय से सोइची 8 घंटा सोइची. सो 8 आवर्स. सो हमें ताको कोन बाहर रिलेशनशिप बाहर करबा. proportion बाहर करबा. proportion माने कोन डिवीजन. अच्छा ताले हम कोन लिखिबा रे hours spent in sleeping by whole. ओके नहीं देखो parts by whole. parts रे कोन सोइबा आ whole. अच्छा केते घंटा से सोइबा यूज करिछि 8 घंटा. सो 8 hours by whole केते 24 घंटा. हां कि नहीं. तार मीनिंग कोन बुझाला. इट शोज दैट आउट ऑफ 24 hours the student spend 8 hours in sleeping. 24 घंटा रो 8 घंटा से सोए पे व्यवहार कर दोछि बुझियला. ताकि बुझा हम कैंसिल कर परिबो ना सिंपलेस्ट फॉर्म कर परिबो. 8 1 जा 8 8 3 जा 24 केते वाला 1/3. सो यार मीनिंग कोन गला. इट शोज दैट आउट ऑफ 3 पार्ट्स जदि सर्कल टा को हम 3 भाग बोली धरिबा 3 भाग बोली धरिबा हला. फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स बोली धरिबा 3 मार्क्स. ताले सोए पे से केते भाग व्यवहार करछि 3 भाग रो मात्र गोटे भाग व्यवहार करछि बुझियला. ताले 3 मार्क को केते मार्क पाइछि 1 मार्क पाइछि. ताले रिलेशनशिप क्रिएट हला कि नहीं. the out of 3 parts the student use 1 part in sleeping. so you can write out of 3 parts okay the student use how many parts. 1 part in sleeping. बुझियला. so it is the relationship between sleeping and the whole. clear. वर्तमान में बाहर करा का बिना रिलेशनशिप स्कूल ले के समय बितेला बाय होल. ओके सो द प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्कूलिंग हला स्कूल जीवा पाए के समय व्यवहार करिछि बा स्कूल ले के समय बितेछि. का रिलेशनशिप तार बाहरिबो स्कूल आ होल भितरे बुझियला. ताले पार्ट ता के हिजो स्कूल हिजो. ताले कोन लिखबा स्लीपिंग बदले स्कूलिंग. के समय व्यवहार करछि स्कूल जीवा पाए 6 घंटा व्यवहार करछि. सो आवर स्पेंट इन स्कूलिंग बाय होल बुझियला. सो वर्तमान देखिबा स्कूलिंग पाए से केते व्यवहार करछि. ही यूजेस 6 आवर्स एंड द होल इज 24 आवर्स. तार माने कोन बुझियला जे आउट ऑफ 24 आवर्स the student spent 6 hours in a school. clear. so you can also cancel it. it will be 1/4. ता माने कोन बुझेला त जदि हम सर्कल को 4 भाग धरिबा तबे तो केते भाग से स्कूल को जाई छी गोटे भाग स्कूल को जाई छी बुझेला. 4 भाग बोल धरिबा माने कोन बोली एटा जोडे सर्कल में आको में केते भाग व्यक्त कर दबा 4 भाग. 4 भाग को ए गोटे भाग से कोन करछि स्कूल पढ़ै छी बुझेला. so you can write out of 4 parts
the student use one part in schooling. So it is also relationship between schooling and the whole. Similarly, you can find the relation between the playing and the whole. Okay, so in the place of school, you can write in playing. खेलवा ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କେତେ ସମୟ ରୁ ଓକେ ସେଠି ପାର୍ଟ ଟା କିଏ ହେଇଗଲା playing so hours spent in playing to the whole खेलवा ପାଇଁ से କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି 3 घंटा ବ୍ୟବହାର କରିଛି ହଁ नहीं so 3 by whole is 24 you can cancel 1 by 8 ତା माने कोन बुझेला एरा मीनिंग या जे out of 8 parts okay out of 8 parts the student will use one part in play तार अर्थ है जदि मु गोटे सर्कल को केते भाग रे विभक्त कर देबी 8 भाग रे विभक्त कर देबी देखो हला कि 8 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 8 भाग रो मात्र गोटे भाग से कोन करछि खेलीछि so now we can relate what is the relationship between the whole and its parts why the circle graph is needed to draw कोन पे हम सर्कल ग्राफ दरकार करू बुझिया लगे नहीं similarly you can also find the relationship between the proportional sector of hours spent in doing homework पे कितना समय व्यवहार करछ देखा doing homework ओके ता अगर ऑडियंस कर दबा जहां जहां बाहरला केते केते पार्ट्स बाहरला हम ता अंडर रे लिखि दबा हला प्लेइंग पे 1/8 बाहरला नै अच्छा स्कूलिंग पे केते बाहरला मन पकेलो आई थिंक 1/4 बाहरला स्लीपिंग पे केते समय बाहर करतला आई थिंक 1/3 बाहरला बुझिया 1/3 1/4 1/8 बर्तन बाहर करबा कोन पे डूइंग होमवर्क एटी कोन लिख दबा होमवर्क ओके सो एटी कोन लिख दबा होमवर्क होमवर्क पे केते समय यूज हेछि देखि दबा 4 घंटा यूज हेछि सो 4/24 you can write it by cancelling so it shows what it shows out of 6 parts the student will use only one part in homework तार अर्थ है जदि गोटे सर्कल को 6 टा इक्वल भाग रे हमें डिवाइड करि दबा देखो एमिति का ठीक है 6 भाग 6 भाग रो मात्र गोटे भाग से कोन करछि होमवर्क करछि बुझिया त केते बार रिलेशनशिप हम व्यवहार करले होमवर्क टा 1/6 अंडरस्टूड last but not the least the fifth part that is the sector of hours spent in other activities ताले हमें बर्तन का रिलेशनशिप बात करबा अदर एक्टिविटी आउ टोटल सर्कल करबा होल पर बट 24 आवर्स पर सेटा हे गला अदर एक्टिविटीज ओके in other activities okay so other activities fine से कितने समय व्यवहार करतला 3 घंटा होल माने केते 24 घंटा कैंसिल करला केते बारला 1/8 ताने out of 8 parts the student use only one part in doing other activities अलग काम करिया पे से कितने समय व्यवहार करला मात्र गोटे भाग व्यवहार करला केते भाग 8 भाग तार मीनिंग भी बुझी जाबा तो सर्कल को केते भाग विभक्त करबा 8 भाग रे 8 भाग मात्र गोटे भाग रे से कोन करछि अदर काम करछि बुझी लागै सो केते बारला हमर अदर्स बारला 1/8 now I think you can understand how and why a circle graph is needed to find the relationship between the whole and its part या माने कोन बुझेला 4 भाग रो भागे 3 भाग रो गोटे भाग 6 भाग रो गोटे भाग 8 भाग रो गोटे भाग 8 भाग रो गोटे भाग बुझिए कि नहीं सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कल ग्राफ ओके एंड लास्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड आ गोटे जिंस मन रखिबा जोटा कि वे तो इंपोर्टेंट नुहे बट नीडेड कोन से जिंसला देखो जो जतिका पार्ट रे डिवाइड हे जंती तो से माने कोथरा रिलेशनशिप बाहर कर दे छै कि नहीं कोन कोन बाहर से सान रिलेशनशिप स्कूल आ होल विद रिलेशनशिप केते 1/4 स्लीप आ होल विद रिलेशनशिप केते 1/3 ओके होमवर्क आ होल विद रिलेशनशिप वाला 1/6 आ अदर्स सहित रिलेशनशिप वाला 1/8 प्लेइंग सहित रिलेशनशिप वाला 1/8 जते बे ए जो पांचटा रिलेशनशिप को हम मिसै दबा ताले हम कोन आसीबा दरकार कहले
पूरा कंप्लीट सर्कल आसा दरकार नहीं केता सर्कल आसा दरकार गोटे सर्कल काहे की तो एडा तर छोट छोट पार्ट हला मने करो तुमने ए जो व्हाइट बोर्ड को विभिन्न आकार को काटी देलो तो सबोडा को जोड़ी दबो ताले तुम केतरा पाइबो व्हाइट बोर्ड गोटे ही व्हाइट बोर्ड पाइबो कि नहीं सेमिति का जदि सब पार्ट को मिसेई दबा ताले पाइबा कोन गोटे सर्कल देखिबा सत कि मिछ मिसेबा एलसीएम बाहर करो केते होजी 24 24 4 डिवाइड कर 6 8 4 3 3 now let's add 8 8 6 14 दे 18 3 21 3 24 by 24 and 24 cancel to give 1 pile one part so all this relationship all these parts are being added to give a complete circle